Hello friends, my name is Mohammad Sohil and today I am here to teach you very important topic in inorganic chemistry as well as in pharmaceutical analysis, that is limit test. In this lecture, we have covered the basic definition of limit test, factor that affect the limit test, types of limit test, principle behind that limit test and procedure for standard and test solution. So without wasting time, let's get started. First of all, हम देखेंगे what is the basic definition behind the limit test. Limit test is quantitative and semi-quantitative test designed to identify and control small amounts of impurities which are likely to be present in a given sample. The test opalescence, turbidity, color produced by the reaction of specified amount of impurities in the test sample with the reagent is compared with the standard opalescence turbidity produced by the reaction of known amount of impurities in standard with the reagent. लिमिट टेस्ट क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जो यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज विच आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन गिवन सैंपल. इन लिमिट टेस्ट जो भी हमें ओपेलेसेंस टर्बिडिटी और कलर मिलता है इन टेस्ट सैंपल उसे हमें कंपेयर करना होता है ओपेलेसेंस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल. नाउ अब देखते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लिमिट टेस्ट. फर्स्ट, सेंसिटिविटी. सेकंड, specificity, and third, control and personal error. Then types of limit test. Test in which there is no visible reaction. Then comparison method. And third, quantitative determination. So these are the types of limit test. Now coming to the importance of limit test. It is used to find out the amount of avoidable or unavoidable amount of impurities present in the substance. It is also used to find out harmful amount of impurities. Now coming to the principle behind the limit test. Limit test for chloride is based on the principle of soluble chloride with silver nitrate in presence of dilute nitric acid to form chloride which appears solid particle in the solution. क्लोराइड आयन को हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो हमें सिल्वर क्लोराइड और फ्री नाइट्रेट आयन मिलता है. सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड. Now what is the role of nitric acid? It prevents the precipitation of other radicals like phosphate, sulfate, etc. with silver nitrate solution. Now coming to the procedure of limit test for chloride. सबसे पहले procedure for standard solution. Pipette out 1 ml of standard sodium chloride solution into Nessler cylinder and marked as standard. सबसे पहले प्रोसीजर फॉलो करने के लिए दो नेस्लर सिलेंडर लेने होंगे. देन उसके बाद हमें उन नेस्लर सिलेंडर को मार्क करना होगा. एक नेस्लर सिलेंडर को स्टैंडर्ड से या फिर एस और दूसरे नेस्लर सिलेंडर को टेस्ट या फिर टी. देन 1 ml स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना होगा इन नेस्लर सिलेंडर. देन आफ्टर ऐड 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. देन डाइल्यूट इट विथ डिस्टिल वाटर अप टू 50 ml. देन फाइनली ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन and immediately stir with a glass rod and allow it to stand for 5 minutes. Now coming to the procedure for test solution. Dissolve the specified amount of given sample in distilled water in Nessler cylinder and marked as test. For test solution हमें Nessler cylinder लेना है और सैंपल को वेट करके डिस्टिल वाटर के साथ मिक्स कर देना है. आफ्टर दैट add 10 ml of dilute nitric acid. Then dilute करना है with distilled water up to 50 ml marking. And finally add 1 ml of silver nitrate solution and immediately stir with a glass rod and allow it to stand for 5 minutes. Then observe it under black backgrounds. Now coming to the observations and interference. The opalescence produced in sample solution should not be greater than the standard solution. If opalescence produces in sample solution is less than the standard solution, the sample will passes the limit test for chloride and vice versa. In this way, we have completed the limit test for chloride.